Hello everybody, welcome to iExamB's Legal Bee. This is Amrita, your law faculty here at iExamB. I welcome you all to iExamB's law channel that is Legal Bee. Legal Bee पे हम लोग काफ़ी सारे important legal updates लेकर आते हैं, competitive exam preparation related content, videos, strategic videos for your preparation, guidance and whatnot. So आप Legal Bee को subscribe करना ना भूलें. आज के वीडियो में भी मैंने आप लोगों के साथ एक इंटरेस्टिंग डिस्कशन लाया है दैट इज रिलेटिंग टू इलेक्टोरल बॉन्ड्स. बिफोर वी स्टार्ट विद दैट, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब. कोई भी क्वेरीज हो, अगर आपकी क्वेरीज रिलेटेड टू एनी ऑफ द रेलेवेंट टॉपिक रिलेटिंग टू एनी एग्जाम प्रेपरेशन, you can reach out to us by writing us an email on hello@iexamb.com. You can also call us on the number 920-552-4028 and visit our website www.iexamb.com. हमारे वेबसाइट पे जाके आप सारे ऑनलाइन कोर्सेज के डेमो भी चेक कर सकते हैं एंड देन यू कैन प्रिपेयर 50% फास्टर विद अस एट iExamB. आज की वीडियो में हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा इलेक्टोरल बॉन्ड्स. दिस इज अ वेरी हॉट टॉपिक दैट इज गोइंग ऑन करंटली as it has been held as unconstitutional by the Honorable Supreme Court of India very recently. Why this has been held as unconstitutional? Is it against the right to information? RTI, जैसे हम सबको पता है RTI बहुत ही फेमस वर्ड है हम लोगों के लिए. RTI कर देंगे, RTI डाल देंगे, इस तरीके के हम लोग वर्ड्स कॉमन लैंग्वेज में यूज करते हैं. इवन द पीपल ऑफ द नॉन लॉ डिसिप्लिन, दे थिंक दैट RTI is a very big weapon in their hands. But then the schemes that are coming up nowadays, are these schemes a threat to this RTI, which is a weapon in the hands of the democratic people of India? So this is what is the main issue that we are going to discuss in this video today. Electoral bonds को unconstitutional किस ground पे होल्ड किया है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने. अनकॉन्स्टिट्यूशनल होल्ड करने के बाद इमीडिएटली उसका यूजेज बंद हो चुका है. दिस इज ऑल्सो समथिंग विच यू शुड नो इमीडिएटली. एंड अगर आप किसी और को जानते हैं जो ये बॉन्ड्स परचेज करना चाहता है या इसके बारे में सोच रहा है, लेट देम नो. एंड एनीवेज उनको अभी इसका सर्कुलेशन मिलने भी नहीं वाला है. दैट इज गोइंग टू हैपन ओनली फ्रॉम SBI एंड SBI को इमीडिएटली डायरेक्शंस दे दिए गए हैं. So how this has been held as unconstitutional, that we will be seeing. But before we go to that part, we need to understand what is an electoral bond. Electoral bond is like a promissory note, and actually promissory note तो है ही, ये negotiable instrument की तरह काम करता है. Bearer instrument payable to the bearer on demand. There are some things which are not like a promissory note, that the details of the payer and payee, all these things are not there on the electoral bond. Electoral का concept ही पूरी तरीके से anonymity पे based है. It is maintaining confidentiality of the parties. अगर हम लोग EVM की बात करें, वहाँ पे confidentiality maintain होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है. जब हम वोट देते हैं उस पर हम हमारी आइडेंटिटी अगर रिवील ना करें या हम किसी से डिस्कस ना करें कि हम किसे वोट दे रहे हैं, दैट एनोनिमिटी इज डिफरेंट. But when it comes to payment of money for the development of the parties, this anonymity is something different. We cannot say that both these things are relating or these are leading to the development of good governance in the country. And this is what is the point that Honorable Supreme Court has considered that this is unconstitutional on 15th of Feb by a 5-judge bench. And the citation name is Association for Democratic Reforms versus Union of India. What is the major reason? It is violative of Article 19(1)(a) of the Indian Constitution. 19 talks about 6 freedoms. पहला freedom है freedom of speech and expression. And उसका एक inevitable part है right to information. Right to information को 19(1)(a) में interpret किया गया है. It is a fundamental right of every citizen to know certain things until and unless they are covered under the confidentiality due to certain reasons. But electoral bonds is not something which should come under confidentiality over here. The court has held that the scheme, electoral bond scheme, by permitting anonymous political donations has infringed upon the fundamental right to information under Article 19(1)(a) of the Constitution. If you are talking about anonymous political donations, then that is something which should be disclosed. Right to information cannot be compromised. What are the reasons for it?
It is a fundamental right. Of course, fundamental right is a very, very important facet, especially in a democratic country like India. It is not only restricting to fulfilling the freedom of speech and expression, but also plays a key role in furthering participatory democracy by holding the government accountable. When you are talking about the money received by the political parties, the donations, even if it is in the form of donations, the government has to be accountable for it. When the political parties are elected, everything should be transparent. The process should be free, fair, and transparent. We cannot compromise on right to information over here. The government and everything should be a transparent process. Only then we can say that we are moving towards good governance. अगर हम उस चीज़ को हाइड करेंगे तो पता नहीं किस तरीके के डोनेशंस कहाँ से पॉलिटिकल पार्टीज को मिल जाएंगे, एंड ऑल्सो इस तरीके से हम फॉरेन कॉन्ट्रीब्यूशंस को भी रेगुलेट नहीं कर पाएंगे. सो ये भी काफ़ी इन्फ्लुएंशियल फैक्टर बन सकता है इन आर elections at India. No doubt, at the international level, also countries are very much interested in the elections in our country, or for any country. For any matter, in any country, if elections are there, other countries also try to interfere in it. So ये एक मार्ग बन जाएगा उन लोगों के लिए कि वो anonymous contributions देकर political parties को influence कर सकते हैं, and then that can be a part of our democratic process, which is not good. It should be free and transparent. Only then it will be fair. There was an amendment that was carried out to Section 29C of the Representation of People's Act, and that amendment has been quashed by the Supreme Court in this judgment. The amendment actually removed the need to disclose information of donations above ₹20,000 if it is for an electoral bond purchase or it is for electoral bond scheme. So अगर उसके लिए हम 20,000 से ऊपर डोनेशन देते हैं तो फिर उसके बाद आपको इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज करनी होती है. अगर ये अमेंडमेंट ना किया गया होता, एटलीस्ट हम लोग 20,000 से ऊपर की इन्फॉर्मेशन देते तो वो काफ़ी हद तक ठीक होता, ऐसा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क किया है इसमें, एंड उन्होंने इस अमेंडमेंट को भी क्वॉश कर दिया है. कॉर्पोरेट कॉन्ट्रीब्यूशंस पर भी एडवर्स ऑब्जर्वेशंस ली गई थी. अगर हम कंपनीज की बात करें, कंपनीज हैव अ वेरी गुड पेइंग कैपेसिटी एज कम्पेयर टू एन इंडिविजुअल. So this is completely arbitrary and against free and fair elections. अगर हम corporate contributions और individual contributions यानी कि donations को एक ही footing पर measure करें तो. So what were the final directions that were issued by the Supreme Court? SBI is ordered immediately to stop the issuance of further electoral bonds. And जितने भी electoral bonds अभी तक 2019 से लेकर अभी तक till March 6, whatever bonds have been सोल्ड आउट, मार्च 6 तक उसकी डिटेल को कलेक्ट कर रखना है, एंड ECI ने सारी इंफॉर्मेशन को पब्लिश करना है. इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास ये सारी इंफॉर्मेशन जाएगी, विच विल बी डन बाय SBI, बिकॉज SBI वाज द एजेंसी दैट वाज हैंडलिंग ऑल दिस. सो SBI बैंक जो है वो ये सारी इंफॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दे देगा, एंड दैट विल बी सब्सिक्वेंटली पब्लिश्ड at the most by 13 March. So these deadlines also have been provided, क्योंकि इलेक्शन से पहले ये सारा सब कुछ वाइंड अप होना बहुत ज़रूरी है टू हैव अ फ्री एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन प्रोसेस इन आवर कंट्री. एंड द इलेक्टोरल बॉन्ड्स विच आर विद इन वैलिडिटी पीरियड ऑफ 15 days, एंड अभी तक वो एनकैश नहीं हुए हैं, यानी कि परचेज हो गए हैं, एनोनिमस कॉन्ट्रीब्यूशन दे दिया गया है पॉलिटिकल पार्टी को, बट अभी तक उन्होंने एनकैश अगर नहीं किया है, इट इज स्टिल इन प्रोसेस, देन दैट ऑल्सो नीड्स टू बी रिफंडेड बैक in the purchaser's account. So these are some things which are very, very important points or highlights about this electoral bond scheme and its unconstitutionality. अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई है या कोई भी डाउट्स है या कोई चीज़ आप ऐड करना चाहते हैं, you can directly write in the comment section of this video, and don't forget to subscribe for all such kind of videos, updates and information at iExamBees Legal B. Prepare 50% faster with us at iExamBee. Thank you everybody.